Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. मैं डॉक्टर बिलाल. I really feel honored to have him. प्रोफेसर डॉक्टर इमरान खान सुदोजई मेरे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में और ह्यू इंस्टीट्यूट स्विट्ज़रलैंड के भी ये सीनियर लेक्चरर हैं। और मैं ये चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्यों ज़रूरी है और ये हमारी लोकल कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नॉर्मली हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो ये समझती है कि रिसर्च शायद कोई ऐसी चीज़ है जो बियॉन्ड द स्कोप है और हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है वो उससे बेनिफिट नहीं हो सकते। तो डॉक्टर इमरान चूँकि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस रखते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो हम इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ 2-4 मिनट के लिए आप बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं और फिर इसके साथ साथ बताएं कि हमारे लोकल आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस और हमारे रावला कोट को बिलअमूम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कैसे फ़ायदा दे सकती है कि हम अपने लोकल लोगों का स्टैंडर्ड एलिवेट कर सकें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंडरफुल इंट्रोडक्शन का। मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पुंछ यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का कि रिसर्च पर भी और बहुत इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वो होता क्या है और कैसे बेनिफिट उसकी कैसे ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फर्स्टली रिसर्च इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च के जरिए से हम रियली एक इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं सोसाइटी में उनको आइडेंटिफाई करके उन पर एक स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमैटिकली प्लानिंग कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का ये मतलब है कि हम बहुत सारे डिसिप्लिन या बहुत सारी एक्सपर्टीज को इकट्ठा करके उससे एक सोल्यूशन निकालते हैं, उससे एक हल निकालते हैं। तो हमारे तजर्बे से हमने ये देखा है कि जो इफेक्टिव डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड वो ये है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स डिफरेंट इदारे वो कैसे इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम को वो कैसे टैकल करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। सो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्पेशली एकेडमिक लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पहले बैठा सकें इकट्ठे, उनको एक समझ पैदा करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी thank Dr. Bilal for inviting me to this show. I was very fortunate to be able to address the engineering department along with other departments here at Puch University, Rawalakot, with regards to the notion of research and interdisciplinary research. In effect, what we uncovered was that research is a key indicator of the success of any society. What we mean by that is how much depth and understanding do we have about certain issues and problems. And so what our motive really here is, or has been, is to develop that awareness and understanding. So in order to really understand problems, we must really be able to look at them in some depth. And so to do that, we have introduced this notion of interdisciplinary research, which means that we combine many different disciplines, we take their different perspectives, and we are able to focus in or look at an issue from many different multiple perspectives or angles or views. And so we are now training our young students to be able to do that, to take an issue, to look at it from different perspectives, different angles, different objectives, and then provide some sort of working solution which we can then provide to society. So, for example, here in Rawalakot, we know there are many issues with regards to the environment, socially, culturally, and so what it requires is our team of experts to be able to look at those from different or multiple perspectives and then provide their expert opinions on those. And so we are training both our faculty and our junior scholars to be able to conduct that research. Ask you one other question, that how do you see the difference of applied research in Europe and in Pakistan, and what perspective do you see for the applied research in Pakistan, and how do you correlate it with the sustainable development goals? So how do we see? I think what defines the first world from the third world actually is this notion of how we are able to put many different institutions, many different people with different expertise together to come up with a viable solution. So within what we call the first world or the developed world, systematically they work towards a policy of gaining these different perspectives which I've mentioned. So
they are able to gauge an opinion from many different angles. Now, what we're seeing, unfortunately, in the developing or the third world is a lack of that process. So people are very much stuck in their own domains, their own institutions, and they're not willing to really engage with people from another discipline, another institution, another what you call adaras or ways of life. And so now what is required here is systematically at university level, especially with people like yourself and the great work you're doing, is to be able to get our young students to adopt that mindset. So they are comfortable with working in areas that are outside their expertise, that are outside their comfort zones. So they are now able to address issues that they probably do not have too much information on, but they are willing to research into those problems, and they are willing to work with those people who may have more knowledge than themselves, and are then willing to change their own behavior, their own working methods to actually start to develop some sort of solutions or working solutions in addressing those issues. Thank you, Dr. Imran. Thank you. It's a Pleasure meeting with you. Thank you. Pleasure.